So, hello students, 16th April shift 2 was one of the toughest paper we saw in the session 1. And जो ये paper था, because of the all the four papers, we are sure that cutoffs are going to decrease this year. कुछ ना कुछ impact आएगा cutoffs पे, so do not panic and focus on the session 2. And other than that, I want to address one thing कि जिन भी बच्चों को जो भी कंफ्यूजन आ रही हैं while availing the scholarship, they can email us as well and do avail this scholarship using the code BITSAT open. We have already started working on creating new mock papers and planning of the new course content as well according to the session 2. जो भी हमें अभी फीडबैक मिल रहा है इन द प्रीवियस वीडियो वी सॉ दैट कि कई स्टूडेंट्स को 16th अप्रैल शिफ्ट 1 में लग रहा था कि सर ये पेपर काफी टफ है, बट इफ वी सी द डेटा बच्चों जो 200 प्लस स्कोरर्स हैं स्पेसिफिकली इन दिस शिफ्ट, उसका नंबर काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू शिफ्ट्स. फॉर श्योर द 300 and 250 plus scorers ka percentage is almost relatively similar. So that is one reason we were saying ki this shift was slightly easier as compared to the other shifts. And can we tell students about the overall analysis of this shift, Kushal? So this shift actually humbled top JEE scorers, the students who used to think मैं JEE तो कर ही लिया हूँ, बिटसैट तो इजीली हो जाएगा. A student who scored 99.9 percentile in JEE main chem scored just 42 marks in chemistry section here. So imagine, like, the JEE preparation and BITSAT preparation is completely different, as we have been telling you guys. So this particular paper had a lot of ambiguity, a lot of weird questions, as well as a lot of heavy time traps. The similar thing which we wanted to prepare you guys through BITSAT open, every single thing, every single unpredictability was there in this particular paper. It was calculation heavy, plus in physics questions from the topic of astrophysics, इस type के questions पूछे गए थे. So in English LR as well, it became tougher than the previous shifts. So overall, if we talk about the paper, it was definitely, we can say, the toughest shift of the session 1. So Kunal sir, can you tell us about different subjects in detail? Okay, तो physics में क्या हुआ? So magnetism, gravitation and rotation से questions were there definitely, and weird thing was electrostats had no questions and many topics that we expect वो आए ही नहीं. That was the different part. Astrophysics का question, as you rightly said, आया. Right shift का question था exactly वो, where this is a application of Doppler's effect जो बच्चे पढ़ते नहीं है but उन्होंने पूछ लिया ये भी. And angular resolution, उसके अलावा ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन इज कंसिस्टेंटली कमिंग इन ऑल द फोर शिफ्ट्स वी सॉ. सो ये था हाईलाइट जो हमें फिजिक्स में देखने को मिला. एंड वी आर आल्सो कलेक्टिंग द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, वी विल शेयर देम विद द स्टूडेंट्स. केमिस्ट्री हैड मेनी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. हमें वो क्या फैक्ट्स थे वो अभी तक नहीं मिले हैं, बट बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर रैंडम कंपाउंड के नाम पूछ लिए जो हमने कभी देखे नहीं थी चीजें. And physical chemistry again dominated in all the four shifts. Physical chemistry dominated and inorganic का weightage least रहा. इसमें कोई भी change नहीं आया इन चारों shifts में. बच्चों ने बोला कि सर log की values were not given but questions में calculations were there. So वो भी एक problem create कर रहा था कि क्या value लें, 2 digits तक लें, 1 digit से ही काम चल जाएगा. And 8 to 9 questions are reported from the related chapters. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आया, सॉलिड स्टेट भी हमसे पूछा गया. एंड कमिंग टू द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वाज लेंदी बट नॉट टफ दिस टाइम. स्टूडेंट सेड कि क्वेश्चन तो हो पा रहे थे क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि यस डिफरेंशियल इक्वेशंस विल कम, प्रोबेबिलिटी विल कम, बट टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली था. एंड क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन वर देयर बट दे वर नॉट एट ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड. हो सकता है कि उनमें ऑप्शन चेक करना पड़ता है या फिर उन्हें छोड़ देना ही उस टाइम पे बेस्ट डिसीजन था, ये मुझे नहीं पता. बट जो श्योर है हम कि एलपीपी के in all the shifts there are 3 questions, we saw more than 3 questions as well, but in this shift hybrid LPP आया. मतलब LPP question mixed with the probability, ऐसा question उन्होंने पूछ लिया. It was not difficult but we are not habitual when we see such questions. हमें शॉक लगता है एकदम से पेपर में. मिसिंग थे कुछ चैप्टर्स. वी एक्सपेक्ट मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट तो आएगा ही आएगा 100%, उस पे क्वेश्चन नहीं था. एंड as we will move on and we will get more data, we will get to know कि और भी बहुत chapters थे जो missing थे in this specific shift.
that resulted in the weirdness of this paper. So English LR pe I think Kushal will tell you more. So English में vocabulary has returned. अभी तक there were no questions or a very few questions from synonyms, antonyms, or one word substitution kind of questions. But in this particular paper, the vocabulary has returned. इसके अलावा paragraphs were short, but options were highly ambiguous. जैसे कि दो choices similar लग रहे थे बच्चों को. So we also try to give this in our mock test कि यार दो ऑप्शन सिमिलर लगते हैं, बच्चे बोलते हैं कि भैया ए क्यों होगा, बी भी तो हो सकता है, राइट? दैट इज द थिंग, बिटसैट की वही खास चीज है. सो वी ट्राई टू गिव यू दैट थिंग ओनली. सो और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, सो दिस हैज बीन कंटिन्यूइंग ओवर द शिफ्ट्स, और ये इस लॉजिकल रीजनिंग में बहुत बड़ा शिफ्ट आया. दैट इज इट हैज कंप्लीटली बिकम विजुअल हेवी. दैट इज non-verbal reasoning is dominating a lot. Paper cutting, water images, new matrix codes, embedded figures. ठीक है. अब now they introduced a new matrix decoding question type, ठीक है, which students generally don't prepare for. Now I'll show you one question which is there in our mock test series, and you can see we have already prepared you for this kind of question. It was already there in one of our mock tests. So if you guys have been solving the questions properly and analyzing your papers properly, you are already habitual for all the kind of questions that BitSat might ask. English LR was a bit difficult, but again, if you had the practice over the last few days, you would have done good and boosted your marks in this particular section as well. So students, do fill the form. The more data we will get, कल हम फिर से आपके पास डेटा लेके आ जाएंगे and we will come back with the memory based questions. So please show some support and fill the form in as much detail as you can.